Assalamualaikum. Welcome everyone. Bismillahirrahmanirrahim. I'm really delighted to welcome you all on our today's webinar. जिसका मौजू जो हमने सेलेक्ट किया है that's inflation, understanding inflation, and basically we're going to discuss the factors and some practical approaches for investors in general in this webinar. I will going to blend both English and Urdu in the presentation, and since the audience, which I could see, I could see a lot of friends and other members who are attending this webinar. Since the audience is जो हमने initially plan किया था was to target students and investors and the general public, so we have tried to you can say compose this presentation in a very easy to understand format. अब क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे ही एक इकोनॉमी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट और आप कह लीजिए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पहलू है और इसमें काफी सारी डिटेल्स हैं, so it was a big challenge, and obviously because of the time constraints we have tried to keep the flow of the presentation in such a way कि जो अहम points हैं वो हम communicate कर सकें. So I hope that we will be able to do justice on this topic, and let's begin with basically the key points that we're going to be discussing. So सबसे पहले हम थोड़े से रोशनी डालेंगे जी कि under economics 101, the very basics, कि what are the major causes of inflation, and then I will going to discuss the present inflationary wave in the historical context. And then we were going to see कि although inflation के एंगल से हमेशा ज़हन में आता है कि एक जो है ये मौजू ऐसा है कि इसमें तमाम ममालिक की दुनिया में they are facing challenges, but are there any success stories? So उसको थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे, and then lastly जो एक अहम टॉपिक है जिसको डिस्कस किए बगैर हम इस मौजू को नहीं समझते कि उसके साथ इंसाफ होगा, वो ये कि जी inflation preparedness के एंगल से what should be the best practices and approaches in terms of addressing this major challenge. Now, before I proceed, I would just want to set a bit of a context. कि सबसे पहले तो ये कि जी हमने ये मौजू क्यों सेलेक्ट किया है आज के वेबिनार के लिए. So moving on, this graph basically puts things in context कि जी ये जो spike inflation की हमें देखने को मिली है, ये हालिया तारीख में नहीं इसकी कोई नज़ीर मिलती है. जो लास्ट स्पाइक थी वो 2007-8 के टाइम पे कि जब ऑयल प्राइसेस जो हैं आप समझिए कि अप्रोचिंग क्लोज टू $200 पर बैरल, ये स्पाइक वो आई थी और वो इंटरनेशनली आई थी. वी विल गोइंग टू टच अपॉन दैट एस्पेक्ट लेटर ऑन इन द प्रेजेंटेशन. और ये जो डॉटेड लाइन है जो अभी आपको नजर आ रहा है, शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, और उसमें अगेन ये हमने कंसेंसस बिल्ड किया है फ्रॉम द लीडिंग जो एनालिस्ट हैं, जो एस्टिमेट्स बना रहे होते हैं ऑन इक्विटी ब्रोकरेज, फॉरेक्स एंड कमर्शियल बैंक्स की साइड पे, तो कंसेंसस का ये ट्रेंड आ रहा है. इवन आईएमएफ की जो खुद स्टाफ लेवल रिपोर्ट अभी आई है, स्टाफ रिपोर्ट जो आई है, उसके अंदर भी अगर आप एस्टिमेट्स देखें तो वहां भी वो जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है दैट इज वेरी ऑब्वियस. और उसमें जैसे हालिया नंबर अगर भी 29% आया था, और अगर आप इसकी नेक्स्ट रीडिंग देखें जो एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन गालिबन 26-27% के करीब एक्सपेक्टेड है सालाना, जो अब ये जुलाई का नंबर ड्यू है मोस्ट लाइकली इन अ डे और टू. और ये नंबर जून 2024 में आईएमएफ खुद एक्सपेक्ट कर रहा है क्लोज टू 16%. एंड मार्केट्स के अगर एस्टिमेट्स पे हम थोड़ी सी नजर डालें तो ये एस्टिमेट बन रहा है तकरीबन राउंड अबाउट क्लोज टू विद इन दैट रेंज. In fact, it's coming little lower than what IMF is projecting. So that is good news. और इसमें जैसी बात है जो already इतनी high base हमारी इस वक्त set हुई भी है, that has got a lot of say in terms of just outlook बन रहा है फिलहाल. All right, so quickly moving on. अब ये एक जंग में जुलाई 12 के इशू में एक अनवर शऊर बड़े मशहूर शायर हैं, इनका एडिटोरियल के कॉलम में अशार आ रहे होते हैं, रुबाई आ रही होती है, तो उसमें इनका एक ये आया हुआ था, और ये कीमतों के ज़मन में हम क्यों फ़कत जून या जुलाई की बातें करें, दिन महीने साल की तखसीस क्या,
मुस्तकिल महंगाई की बातें करें, तो ये बेसिकली यहाँ ऑन अ लाइटर नोट शायर की जो शेर से मुराद है वो ये है कि जी आज के शायद एमपीसी डिसीजन में अनदर 100 बेसिस हाइक या मे बी मोर इज एक्सपेक्टेड। तो ये शेर यहाँ मकसद ये है आप लोगों से शेयर करने का कि दिस इज बिकम सॉर्ट ऑफ वी आर ऑल अट्यून्ड कि दिस इज द ग्राउंड रियलिटी एंड इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे। तो ये एक माहौल बना हुआ है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप मीडिया पे और जनरली when we sort of skim through जो भी न्यूज और डिफरेंट सर्कल्स में बातें हो रही होती हैं, तो एक आम तासुर ये जाता है कि जी पाकिस्तान में ही एक ये जो पॉलिटिशियंस फॉर इंस्टेंस ये डिस्कस करते हैं कि जी ये पाकिस्तानी मसला नहीं है, एक बैनुल अक़वामी मसला हुआ है। तो देखिए ये बात इसमें बिल्कुल हकीकत है कि ये वाकतन और इसकी हकीकत को अगर हम परखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जेन्युइनली जो है एक दिस इज एन इंटरनेशनल इशू। एंड दीज कार्टून्स जो हैं ये क्लियरली टेलिंग यू कि टर्की हो गया, वेनेजुला है, इजिप्ट, श्रीलंका की लेटेस्ट सिचुएशन है, और ये सब इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर। इसी तरह से आप लेटेस्ट न्यूज पे देख लें, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये अभी एक सर्वे हुआ था, दिस वाज 2022, एंड इन्फ्लेशन टॉप द लिस्ट ऑफ वरीज फेसिंग अमेरिका। तो ये एक सर्वे था, उसका रिजल्ट हमने दिखाया था। इसी तरह से अगर आप ये रीसेंट कुछ न्यूज हेडलाइंस देख लें तो इनमें भी तासुर जो है वो आपको यही मिलेगा कि ये दिस हैज बीन अ मेजर चैलेंज। अच्छा, इसमें अगर आप लास्ट एक आर्टिकल जो हमने यहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है, वाई आर इंटरेस्ट रेट्स नॉट टेमिंग इन्फ्लेशन, दिस आर्टिकल केम ऑन द जुलाई 4th ऑफ जस्ट दिस मंथ बेसिकली। तो ये काफी रिसेंट आर्टिकल है। इसी के तनाजुर में मैं थोड़ा भी आगे भी थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा, बट अगेन एक्सपैंडिंग ऑन कि जी इस वक्त बैनुल अक़वामी माहौल क्या बना हुआ है। तो उसमें आप देखिए कि इन्फ्लेशन अप अंटिल लास्ट ईयर तक जनरल जो एक तासुर था, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द फेड, वो उसके इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटोरी, और फिर उस पर काफी एक क्रिटिक हुआ कि जी ऐसा नहीं है, और एज इट केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, तो उसमें फिर लोगों ने कहा नहीं यार कि ये इसमें और भी फैक्टर्स आ रहे हैं, इवेंचुअली वी स्टार्टेड ब्लेमिंग रशियन यूक्रेन वॉर। तो ये जो अभी डिबेट आ रही है, दिस डिबेट इज नाउ मूविंग स्लाइटली फ्रॉम कि जी इन्फ्लेशन जो है इट्स फ्रॉम ट्रांजिटरी टू इट्स बिकमिंग लिटिल मोर स्टिकी। तो ये कभी डिबेट आएगी, ऑल्दो अभी मैं आगे आपसे नंबर्स भी शेयर करता हूँ कि ग्लोबल जो नंबर्स हैं वो काफी ड्रॉप हो गए हैं, बट स्टिल जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे क्विकली अगेन आप देख लें तो यहाँ पे ये दिस सिचुएशन इज जस्ट टेलिंग यू कि जी अगेन फेड पे जितना क्रिटिक हुआ है, और सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली हैव बीन वेरी लेट इन टाइटनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, और इन्फ्लेशन जो है वो उसका जो रिस्पॉन्स था दैट वाज क्वाइट लेट। मूविंग ऑन, ये जो मैं फाइनेंशियल टाइम्स के जिस आर्टिकल में आई वाज ट्राइंग टू रेफर, इसमें अगर आप देख लें तो इसमें कुछ उन्होंने फैक्टर्स हाईलाइट किए हैं, जिसमें दो अहम फैक्टर्स में से एक फैक्टर उन्होंने कहा है कि लेबर मार्केट्स हैव बीन क्वाइट टाइट, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है मॉनेटरी पॉलिसी का वो उस तरह से नहीं आ सका है। तो अगर आप इस चार्ट पे देखें ऑन द राइट, इट्स जस्ट सेइंग कि दी अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल हैज ड्रॉप्ड, यानी कि इफ यू कंपेयर 2023 vis-a-vis you compare that with the last 20 years average, so the unemployment has significantly dropped, तो जिसकी वजह से wages have been sticky, और वो भी एक फैक्टर हुआ है कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं इन्फ्लेशन का जो है वो एक आप समझिए कि इम्पैक्ट उस तरह से नहीं ट्रांसलेट हो पा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे एक और फैक्टर इंटरेस्टिंग जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो ये है कि जी अगर आप कंपोजिशन देखें जो मेजर इकोनॉमीज हैं वहां पे हाउस होल्ड्स हु ओन प्रॉपर्टी विद अ मॉर्गेज आर अ माइनॉरिटी इन मोस्ट कंट्रीज। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डाटा जो कि इस फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में आया था, जिसमें 2022 को अगर आप कंपेयर कर लें तो 2010, तो ये नंबर कुछ ड्रॉप हुआ है। और इसी तरह से डिटेल्स इस आर्टिकल में मेंशन हुई थी कि जो फिक्स्ड रेट मॉर्गेज है उसका जो तनाजुर एक जमाने में जरा होता था वो दैट हैज ड्रॉप्ड, या आप समझ लें कि जो वेरिएबल रेट जो मॉर्गेजेस हैं वो उनका तनासब भी निस्बतन कम है। तो इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स का बहुत ज्यादा हाइक हो जाना जो है वो उस तरह से लोगों को इम्पैक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन स्टिल is on a higher side despite so much of monetary tightening globally. अच्छा जी, now I will just setting the context for this topic, and I just have to sort of manage the time क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा I just have got another 10-15 minutes.
तो इसमें जी सबसे पहले हम क्विकली जरा मेजर कॉजेस क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इन आवर व्हिच वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और इसमें सबसे पहली जो देखिए जो चीज है वो है बुनियादी तौर पे तीन इसमें फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर इसमें है सिंपली डिमांड एंड सप्लाई एंड बैलेंस। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक्स बात करें सो एक पर्सपेक्टिव ये है कि व्हेनेवर डिमांड ओवरशूट सप्लाई तो एक इकोनॉमी में ओवर हीटिंग हो जाती है एंड दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। और ये हमारे यहाँ रीसेंट एपिसोड अगर आप देख लें तो 2018 में जब करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत हाल $18 बिलियन क्रॉस कर चुकी भी थी और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट वाज ऑन टॉप ऑफ 6% फॉर दैट ईयर। और उसके बाद जो सिचुएशन आई स्पेशली जो एक्सचेंज रेट में डिवैल्यूएशन हुई है और उसकी वजह से जो सारा इन्फ्लेशन का जो जो हमने सूरत हाल देखी है वो हमारे सामने है। तो दैट व्हाट हैपेंस लाइक इफ यू सी इट फ्रॉम द डिमांड साइड। सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर आपकी सप्लाई साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं जिसकी जो हालिया एग्जांपल्स दुनिया में मिलती हैं दैट्स डिमांड सॉरी सप्लाई शॉक्स में जिस ऑयल शॉक एक 1970s का आया था और एक कोविड-19 पेंडेमिक जो अभी रिसेंट हमने सबने देखा है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रेजेंस क्लासिक एग्जांपल ऑफ सप्लाई शॉक्स के जहां पे देन वी सॉ इन्फ्लेशन शूटिंग अप abnormally at a higher levels। अच्छा जी नेक्स्ट अगर आप देख लें तो सेकंड जो बुनियादी रीजन है वो इज द मनी सप्लाई ग्रोथ। नाउ यहाँ पे थोड़ी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स आ जाती है और जैसे कि इक्वेशन है बड़ी मशहूर जो 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 लोग इकोनॉमी और क्या नाम है बेसिक आप समझें बिजनेस एजुकेशन जिनका बैकग्राउंड है तो दे वुड बी फेमिलियर विद दिस पर्सनालिटी अर्विंग फिशर who coined this term and the theory, in fact the quantity theory of money। और इसकी आसान जुबान में जो मीनिंग है वो ये है कि जी एडिशनल मनी सप्लाई जो है इट लीड्स टू इन्फ्लेशन कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। और यही इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जो कि दीज फनी कार्टून्स आर रिफ्लेक्टिंग कि जी यूएस के एंगल से आप देख लें या और भी इकोनॉमीज जो हालिया जो स्ट्रगल कर रही हैं वहां पे जो रेकलेस मनी प्रिंटिंग हुई है उससे जो है इट फ्यूल्स इन्फ्लेशन एंड देन एक एसेट प्राइस जो बबल है वो क्रिएट होते हैं और देन ऑब्वियसली उनके फंडामेंटल चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं फॉर द इकोनॉमी। लास्टली आई थिंक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and which is in fact what I call is the elephant in the room is the economic mismanagement। अब यहाँ पे I could have added a lot of points but I think उसमें बहुत सारी repetition हो जाती और क्योंकि अब ये हम स्पेशली एक साल से तो सुन ही रहे हैं और जो है so I just thought just to put it in a simple format for you। So this is self-explanatory, as long as there is no policy management or you say that there is no set goal और आप समझ लीजिए कि ओवरऑल एक इकोनॉमी का कोई प्लान मौजूद नहीं है तो ये एक बहुत ही अहम फैक्टर बन रहा है फॉर क्रिएटिंग इन्फ्लेशन। तो बुनियादी तौर पे जो तीन फैक्टर्स हैं जिसमें डिमांड सप्लाई बैलेंस है, दूसरा आपका मॉनेटरी पूरी इकोनॉमिक्स चल रही है सप्लाई, ये भी उसी के तनाजुर में फॉल कर रहे होते हैं कि अगर आप इकोनॉमी को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। और ये एक बहुत अहम की टेक अवे है फॉर आवर दिस वेबिनार। अब फॉर इंस्टेंस इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूं, अगर आप देख लें तो इसमें एग्रीकल्चर के आपके पास आ रहा है विच इज आर बेसिकली जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है और जो हमारी इस स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है उसकी आप सूरत हाल देख लें एग्रीकल्चर की कि इसमें सिंपली अगर आप ऑन द राइट हैंड साइड देख लें प्रोडक्शन का 25 ईयर केगर देख लें आप व्हीट राइस एंड कॉटन एंड लाइकवाइज जो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल्स हैं उसमें भी अगर आप सालाना ग्रोथ देख लें जो ईल्ड्स में हुई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसी तरह से अगेन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में होता क्या है जैसे 2018 की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि हमारी जरा सी भी इकोनॉमी बेहतर है और आप या जैसे पॉलिटिकल एंगल में आप देख लेंगे लास्ट ईयर गवर्नमेंट्स की आती हैं एंड देन दे स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ फ्यूलिंग ग्रोथ। और हमारे पाकिस्तान के केस में तो एस्टेब्लिश्ड रिसर्च है वर्ल्ड बैंक वगैरह की और इट्स क्वाइट डॉक्यूमेंटेड नाउ कि हम इस पोजीशन में नहीं है टू अफोर्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स एट दिस स्टेज। तो हमें तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबलाइजेशन की जरूरत है और इसमें रेकलेस स्पेंडिंग या जो फिस्कल हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन अगर प्रॉपर्ली मैनेज ना हुई भी हो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी ह्यूज चैलेंज फॉर मैनेजिंग इन्फ्लेशन। एंड हैविंग सेड दैट what we end up doing is what is called inflation targeting because we are under a program और उसमें eventually क्या होता है कि then you have to control इन्फ्लेशन जो एक पूरा जीनी इन अ बॉटल जो पहले एक हद तक कन्फाइंड हुआ होता है वो बोतल से बाहर आ चुका हुआ होता है
और उसके लिए फिर आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, और उसका खुमियाजा ये होता है कि बट देन इकोनॉमिक ग्रोथ भी सफर होती है. And it's true, it's a good instrument when you just lonely sort of on a standalone basis just keep on targeting interest rates to address the inflation. फिर देखें ये कंट्रीज हैं अगेन जो हमारे यहाँ नैरेटिव टीवी पे चल रहा होता है कि जी सिर्फ हमारा पाकिस्तानी मसला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी है. बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल बैनुल अक़वामी है. उस तरह की आपको लॉन्ग लिस्ट मिल जाएगी. मैंने यहाँ कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज रखे हुए हैं और ये सारे इनके लेटेस्ट इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं सालाना, जो इनके जून के नंबर्स आए हुए हैं, वेयर यू कैन सी वेनेजुएला, गाना, अर्जेंटीना, टर्की, जिम्बाब्वे, इजिप्ट. तो इनकी जो है वो इन्फ्लेशन जो हायर साइड पर है उसकी वजूहात भी वही हैं जो कि हमने यहाँ पे व्हाट आई कॉल द एलिफेंट इन द रूम इज, व्हिच इज इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट. ऑलराइट, नाउ क्विकली एग्जामिनिंग, ये थोड़ा बहुत हमने पहली स्लाइड में कवर कर भी लिया था, बट यहाँ पे मैंने जी यूएस की भी इन्फ्लेशन प्लॉट की भी ऑन द राइट हैंड साइड, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट्स अगेन पाकिस्तान. यहाँ देख लें अगेन पीरियड्स हैव बीन द सेम मोर और लेस. और यूएस में आप देख लें कि वहां शार्पली इन्फ्लेशन अभी थोड़ी टेम डाउन हुई है, ऑल्दो वहां यूएस फेड का अगर आप लेटेस्ट देख लें व्यूज, तो अगेन वो दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च व्यू बनाया हुआ है ऑन देयर 2% इन्फ्लेशन टारगेट, एंड दे आर सॉर्ट ऑफ अभी रिसेंटली भी इन्होंने फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग की है. बट इन्फ्लेशन अगर आप दोनों चार्ट्स में जो इसमें जो अहम बात है वो ये है, यू कुड सी कि इन यूएस इट हैज कूल्ड ऑफ. The rate which crossed almost over 9% in just few months ago, it is now at 3%, which is the latest number reading. हमारे में जी कूल ऑफ हो रही है, बट अगेन आप देख लें कि हमारे एब्सोल्यूट लेवल पे इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई. अच्छा, इसी तरह अगर आप यहाँ देख लें, यहाँ जी हमने एक S&P गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स है, इसको प्लॉट किया हुआ है, विच इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ ओवरऑल मिक्स ऑफ कमोडिटीज, जिसमें एनर्जी, एग्रीकल्चर, मेटल्स, माइनिंग, ये सब आ जाते हैं. तो इसमें अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली अगेन ये 25 इयर्स डाटा है, और इसमें जो लास्ट 2 स्पाइक्स आई हुई हैं, जो कि अगेन आप देखिए, एक दैट वाज प्री जो फाइनेंशियल क्राइसिस वाला एक सिचुएशन आई थी, और उसके बाद जो एक करेक्शन आई, और उसके बाद अगेन थैंक्स टू द क्वांटिटेटिव ईजिंग एक दोबारा स्पाइक आई थी. तो ये दोनों स्पाइक्स को अगर आप कर लें कंपेयर विद द रीसेंट वन, then again the point that I'm trying to establish over here on the slide is that this has been unprecedented. और इसमें अगेन देयर वर लाइक अगेन इट विल जस्ट गोना बी रेपिटेशन, जो बैक टू बैक इवेंट्स हमें देखने को आए हैं, जो हमने प्रीवियस वेबिनार में भी वी टच्ड अपॉन कि जी कोविड-19, द रशियन यूक्रेन वॉर, देन द यूएस एंड चाइना की जो एक अलग एक पॉलिटिकल टसल जो है, और जो नुमाया है काफी इकोनॉमी के मुख्तलिफ पहलुओं में, तो वो दैट वाज वेरी वेरी ऑब्वियस. So this has been, again, the point is that this has been unprecedented. All right, so moving on. अच्छा, यहाँ पे हमने क्विकली प्लॉट किया हुआ है, और अब यहाँ पे सिंपली द जिस्ट ऑफ दिस ग्राफ इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड, यू कैन सी द शेडेड एरिया, कि राइट फ्रॉम द एक्सचेंज रेट जब से हमारा डिवैल्यू होना शुरू हुआ है और हमारी इन्फ्लेशन यहाँ काबू से बाहर हो गई है. दिस इज द क्रक्स. इंटरेस्ट रेट्स हमारे पहले भी टाइटन हुए हैं, अगेन जो लास्ट वेव आई थी व्हेन द इन्फ्लेशन टॉप्ड ऑलमोस्ट 20%. राइट एक्सिस पे अगर आप देखें तो हमारा एक्सचेंज रेट है, और ऑन द लेफ्ट एक्सिस वी हैव प्लॉटेड द इन्फ्लेशन एंड द बेसिकली इट्स अ 3 month PKRB, द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट. तो इसका जो क्रक्स है वो यही है कि जी एक्सचेंज रेट हैज बीन द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान लेटली. जो इंटरनेशनल मसाइल हैं वो तो हैं ही, बट अगेन इट्स द एक्सचेंज रेट व्हिच इज अगेन इज अ स्ट्रक्चरल इशू. Alright, so यहाँ पे we have हमने एक I just wanted to highlight extract I wanted to share with all of you. This is I've basically taken the staff notes from the State Bank website, और इसमें point number 4 में एक अगर आप highlighted area देख लें, यहाँ the author is trying to make a point कि जी जो exchange rate devaluation है जी, इसका impact बड़ा significant है inflation के ऊपर. तो यहाँ अगर मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली रीड कर दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि बेसिकली 10% depreciation of the rupee will be associated with an 8.3% increase in non-food inflation in the next month. So इसका जी जो पास ऑन इम्पैक्ट है, एक तो काफी फास्ट भी है, और एज पर दिस रिसर्च इसकी तफसीलात आप देख सकते हैं थ्रू दिस डॉक्यूमेंट ऑन द स्टेट बैंक्स वेबसाइट. Moving on, again, this is an international phenomenon. It's not just with Pakistan, Zimbabwe, Algeria, Sudan, and there's a long list where you can see कि जी currency जो है वो basically is always जो first victim होता है ना economic
पॉलिसी का वो आपका एक्सचेंज रेट पे आ रहा होता है, और फिर वो इवेंचुअली ट्रांसलेट हो रहा होता है इनटू हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा जी, अब क्विकली मूविंग ऑन टू कि भाई आर देयर एनी कंपेलिंग स्टोरीज अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज अगेन देयर इज एक डूम्सडे सिनेरियो एक आपके सामने आ जाता है व्हेनेवर यू डिस्कस द टॉपिक ऑफ दिस इन्फ्लेशन। तो यस, देयर इज अ सक्सेस स्टोरी, और इसको अगर मैं क्विकली कवर करने की कोशिश कर लूं तो इसमें यू वुड सी we would like to present Switzerland as a success story. Or the chart on the left is their inflation for the last 25 years. और ये अगर आप देखें, this has not gone past like 5%, even 5%. जहाँ even Germany और अगर आप UK देख लें तो वो तकरीबन 8%, even UK has been much higher. वो इन्फ्लेशन जा चुकी है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी सिलसिला नहीं है। अच्छा, इसमें आई अंडरस्टैंड कि एक आपके जहनों में शायद ख्याल आ रहा होगा कि व्हाई वी आर कोटिंग स्विट्जरलैंड एज एन एग्जांपल, बिकॉज के देयर इज नो कंपैरिजन, इट्स एन एक्सट्रीमली रिच कंट्री। बट अगेन द पॉइंट इज के स्विट्जरलैंड की भी तारीख है, वो अगर आप सब गूगल कर लें, यू कैन यूट्यूब, देयर लॉट्स ऑफ articles, fantastic piece of information available on the websites, on the different sources, और ये सब जगह लिखा गया, not just like within Europe, कि जी ये इसकी जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वो बेसिकली समझ लें कि रीजन है फॉर delivering an inflation number which has remained under control throughout all these ups and downs in the economic cycle. तो एक तो they have a very strong economy, अगर आप GDP per capita देख लें, which is even comes higher than US. ट्रेड की अगर आप इनकी सूरत हाल देख लें, they have a very very favorable trade balance. They export over like $300 billion worth of goods, और उसमें जो सारे वैल्यू एडेड गुड्स हैं, तो which is like very very inelastic in terms of market movements जो भी ग्लोबली हो रही होती है। इसी तरह से ऑल्टरनेटिव एनर्जी का शेयर जो है इनकी एनर्जी प्रोडक्शन में, दैट इज आल्सो वेरी हाई, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 60% from water. And lastly, they have a very very structured price control mechanism within the country, so the government doesn't actually allow to let the inflation run away off the roof. So this is just a quick overview of one success story which we wanted to share, and I would really want you to delve more into the details, but abhi kyunki waqt ki kami hai, so I just have to move on to the next slides. Lastly, 3:30 ho gaya, I would just like to take just 2 or 3 minutes, और इसके अंदर quickly अगर if we touch upon, so I have basically shortlisted 4 key important points over here. देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जी सेविंग्स, फ्रूगैलिटी और जो पर्सनल फाइनेंस है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब्जेक्ट्स लाइक वेल्थ मैनेजमेंट दे आर नॉट टॉट इन स्कूल्स। हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि जहाँ अक्सर औकात हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल है, या जो है जनरली बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ भी एंड अप डू अ लॉट ऑफ ओवर स्पेंडिंग, वो चीजें काफी हमारे लिए क्रिटिकल हो जाती हैं। तो सेविंग्स एंड फ्रूगैलिटी इज द क्रक्स। तो इसमें ये है कि जी जनरली जब भी इन्फ्लेशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही होती है, तो वी ऑलवेज ट्राई एंड सी कि वेयर डू वी इन्वेस्ट, वी शुड इन्वेस्ट इन से स्टॉक्स और रियल एस्टेट एंड व्हाट नॉट, बट जो बेसिक्स है, द क्रक्स इज दैट if you not going to be saving, तो उसमें फिर what you will going to be having at the end of the day to invest. So savings का ये है कि it's a culture, it's a mindset that you have to build, और स्पेशली जो नई जनरेशन आ रही है, हमारे घरों में बच्चे हैं, उनको हमें उस तरह से ट्रेन करना चाहिए। और यहाँ पे adjacent investments, this is our one of the key goals where we want to basically क्या कहते हैं, we want to make this point at every platform कि this is extremely important, especially in a country like Pakistan, कि जहाँ there are so many challenges and you have to basically look for yourself at the end of the day. इसी के साथ ही आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसके अंदर रीडिंग बहुत जरूरी है, और जो एक लॉट ऑफ टाइम दैट वी एंड अप स्पेंडिंग ऑन व्हाट यू कैन से मे बी माइंडलेस कंजम्पशन ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाट नॉट, उसमें हमें टाइम सेव करके फाइनेंशियल लिटरेसी पे थोड़ा सा रीडिंग करनी चाहिए। और तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इसी तरह से जो एक इंपॉर्टेंट पहलू है वो है एंटरप्रेन्योरियल एंड ग्रोथ माइंडसेट। नाउ समबडी हु वांट्स टू जस्ट से
एक आप अब जैसे हम फॉर इंस्टेंस एक लोग होते हैं जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, और एक होते हैं जो जी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में लोग फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स दे डू बिजनेस, वहां वही सिलसिला चल रहा होता है बहुत सारे लोगों में कि जो जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो जी हमारी जनरेशन की आगे पूरी नौकरी कर रही होगी। तो इट्स नॉट जस्ट द नौकरी एंड द डूइंग बिजनेस, बट इट्स अबाउट द माइंडसेट कि you can still sort of decipher and come up with so many ideas, whether you're in a manufacturing sector where you have a factory and you produce, you do exports, or you're doing a job say in an investment bank, or say you're a doctor. तो उस हवाले से that growth mindset is extremely important to if you want to fight inflation. Lastly, social activism. Now, this is another very important aspect कि जहाँ पे as individuals, collectively, again, yeah, I'm taking some points from the developed economies. Say even अगर आप थोड़ा स्विट्जरलैंड पे पढ़ें तो you will find over there कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि जहां आप कहीं इस्तेसाल देख रहे हैं कहीं, या अगर आप कहीं देख रहे हैं कि कोई चीज ऐसी है कि जहां इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो मैं आपने भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो ये कलेक्टिव एक 4 फैक्टर्स हैं जिसपे आई थिंक would set the ground for the best practices and approaches for if you want to prepare ourselves for addressing inflation. Lastly जी मैंने कि क्विक आपको बताया हुआ है क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। इसमें इन्फ्लेशन को अगर आप देख लें 25 साल का हमने एसेट क्लास रिटर्न्स दिखाए हुए हैं, और इसमें अगर आप कंपेयर कर लें, and again this data is from 1998 going up until say 2023, अभी बिल्कुल up until जुलाई का हमने डाटा इसमें कंपाइल किया हुआ है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इज 8.6, दिस इज पर एनम ऑन अ पर एनम बेसिस बेस्ड ऑन द 25 ईयर डाटा। और इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको ऐसे जैसे इक्विटीज है, गोल्ड है, मतलब इवन इनकम साइड पे उसमें एटलीस्ट आपको ये हुआ है कि जी आपको वीजा वीज रियल बेसिस पे आपको कुछ इनकम प्रोवाइड करते हैं ये एवेन्यूज। All right, so just presenting you the summary on the asset class returns, and this is in context of कि जी inflation की situation में again taking a longer term perspective, वो जो मैंने आपको कुछ behavioral aspects की तरफ I highlighted, उन चीजों को सामने रखते हुए पाकिस्तान में what options do we have? Like generally when this topic is discussed globally, a very important asset class which is is very very important is alternative investments, कि जिसके अंदर primarily अगर आप देख लें बाहर के जो बड़े pension funds हैं, even individuals or large investments funds जो हैं वो inflation के perspective से एक जो important asset class है वो alternative assets की है, which basically compensates for any pressure on the inflationary side over the long term. तो उस पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो बुनियादी तौर पे अब ये हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, इवन हियर एट जेएस इन्वेस्टमेंट्स वी आर वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट, एंड दैट इज रीट्स, एंड वी आर होपफुली वर्किंग ऑन closing another presentation which we would most likely do it in the next couple of months on REITs, real state investment trusts. So that provides a very ideal investment avenue for addressing inflation. But generally अगर आप देख लें तो जो हमारे यहाँ प्लॉट्स या रियल स्टेट के हवाले से बात हो रही होती है, स्पेशली करंट कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक ये बात आम है कि जी आप पिछले 7-8 साल में देख लें तो यहाँ पे अच्छी खासी वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई है। इवन अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देख लें तो जो बिल्कुल पोश एरियाज हैं, जो बिल्कुल ही एक तरह से हॉट केक जो मार्केट्स हैं आप समझ लें, जहाँ काफी काम हो रहा होता है, वहां भी देयर हैव बीन वेरी लो एक्टिविटी, एंड जो रियल स्टेट की भी प्राइसेस हैं उस तरह से वो कोप अप नहीं कर सकी हैं। एंड अगेन क्योंकि मार्केट वहां लिक्विड भी नहीं है, तो वहां एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसी तरह से अगर आप बाकी देख लें, हमारे यहाँ एक मेजर चंक जो है वो बैंक डिपॉजिट्स में एज करंट अकाउंट्स इट्स स्टक, तो वहां पे भी बेसिकली वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही होती है, क्योंकि अभी आप एक्सचेंज रेट के देख लें तो तकरीबन 1/3 पे एक्सचेंज रेट की वैल्यू हमारी निकल चुकी है इन द पास्ट just like 2-3 years. इसी तरह से ये जो हमने सामने प्रेजेंट किया है इसमें यू कैन सी जो चीज आउटक्लास कर रही है वो बेसिकली स्टॉक्स हैं, जिसमें KC 100 एज अ होल हैज डिलीवर्ड 16.5% पर एनम रिटर्न। सो यहाँ रियल बेसिस पे यू कुड हैव नॉट जस्ट सेव मनी ऑन इन्फ्लेशन, बट आप एंड ऑफ द डे आपकी कुछ रियल सेविंग्स भी बिल्ड हो जाती हैं। इंटरेस्टिंगली गोल्ड का मोर और लेस रिटर्न तकरीबन करीब आ रहा है,
इनकम से मुराद हमारी यहाँ पे बॉन्ड्स हैं, जिसमें इफ यू सिंपली अज्यूम करेंगे आप टी-बिल में लेके उसको रोल ओवर कर रहे हो तो वो में 9.5% उसने भी रिटर्न दे दिया है। इंटरेस्टिंगली जो उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज है ऑन दिस स्लाइड इज यूएस डॉलर, जिसपे एक आम तासुर पाया जाता है कि जी आप डॉलर ले लें और उस पे एक हाइक बची हुई होती है। इंटरेस्टिंगली डॉलर का रिटर्न हैज बीन मच लोअर देन इन्फ्लेशन इटसेल्फ। तो जिन लोगों ने भी डॉलर में सेविंग्स की हैं उनके रिटर्न निस्बतन बहुत कम रहे हैं एज कंपेयर टू समबडी हु हैड इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स फॉर इंस्टेंस। अच्छा, ब्लू चिप्स में यू मस्ट बी वंडरिंग ये क्या चीज है जी, इसमें हमने वी जस्ट सिलेक्टेड लाइक 5 जिनका मैं डाटा भी इन द फॉलोइंग स्लाइड क्विकली दिखा देता हूं आपको। उसमें उनका अगर आप एवरेज रिटर्न देख लें साल का वो 25% आ रहा है। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑन प्योरली ऑन एम्पेरिकल एविडेंस अगर आप सामने रख लें तो दैट वुड बी रॉन्ग। So we do have options के जहां पे then again you need to read, you need to explore, और अब we have got यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मौजूद है। अगर आप किसी यानी कि इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट करें तो वो भी आपको एक मार्केट रिटर्न फंड्स दे जाते हैं, और उसमें कुछ फंड मैनेजर्स जो मार्केट को बीट कर रहे हैं वहां यू कैन इवन मेक हायर रिटर्न्स। और ये बेसिकली स्लाइड है जो कि उन ब्लू चिप स्टॉक्स की एक समरी बता रही है, जिसमें हमने 5 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। इसमें जो उसका स्केल है दैट्स फ्रॉम लाइक 20 to 30% हमने इसको दिया हुआ, इसलिए प्रॉब्ली आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, बट जनरली इनका सबका रिटर्न इज ओवर 20%। लकी सीमेंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एमसीबी बैंक, फौजी फर्टिलाइजर एंड हबको। सो दिस इंक्लूड्स बोथ dividends and the price appreciation during this 25 year time period. So that's all, and basically in the end I just wanted to recommend a few interesting readings for you. Books बहुत सारी हैं जिसमें माय पर्सनल फेवरेट वो मैंने इसमें यहाँ पे नहीं रखी हुई है, बट थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल kahneman, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बुक दैट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप उसको पढ़ें, एंड दिस विल रियली हेल्प यू बिल्ड दैट जो थिंकिंग प्रोसेस है आपका, उस हवाले से इट विल बी अ रियली रियली आई थिंक अ बिग वैल्यू ऐड। और इसके अलावा ये जो 2 बुक्स हैं ये प्योरली प्योरली यानी कि इन्फ्लेशन को एड्रेस नहीं कर रही, बट यहाँ पे जो मैंने आपको इनिशियली बताया है, द क्रक्स इज इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट व्हिच एक्चुअली लीड्स टू इन्फ्लेशन। हमने देख लिया स्विट्जरलैंड के जहां चीजें बहुत प्रॉपर्ली मैनेज हुई हुई हैं वहां इन्फ्लेशन कोई 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, वो 25 साल से इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो इन्फ्लेशन का जो एक आम तासुर ये थ्रो किया जाता है कि यस वो एक बैनुल अक़वामी फिनोमेना है, यस इट इज, बट ये जो तासुर दिया जाता है कि वी आर हेल्पलेस, कि जी फ्लड्स आ गए हैं, या फॉर इंस्टेंस ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो शूट हो गई हैं, वो मफरूजा जो है वो दैट्स अ वीक कार्टून। और ये 2 बुक्स जो हैं ये अगर आप इसका मुताला कर लें, दीज आर मस्ट रीड। Why Nations Fail, a very popular book, और ये थोड़ी नई बुक आई है, टॉकिंग टू माय डॉटर अबाउट द इकोनॉमी। दिस इज वेरी वेरी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड टेल्स यू अबाउट द इकोनॉमी इन वेरी वेरी easy to understand format, और just पूरी बुक का लेआउट है। So these are 2 key recommended readings from my end. So that brings me to the end of the webinar, and sorry for going little overboard on our 30-minute basically time जो हमारा था। I hope कि आपने you could all hear me throughout this presentation, and there were no internet issues, I believe. So that's that, and I open the room for Q&A section. If you have any questions या आपके ज़हन में है तो आप at यहाँ पे at the on the right hand side, अभी मैं quickly check भी कर लेता हूँ। All right, so just give me a few minutes, a minute or two. I just want to quickly go through the questions and would like to address अगर आप लोगों के ज़हन में जो आप लोगों ने questions present किए हैं। I'm just going to mute myself for a minute. Thank you. All right. I hope you can all hear me, and I have gone through the list of all the questions. So I think आप लोग के जो ज़्यादातर questions हैं वो address कर रहे हैं monetary policy के angle से, और what you all are trying to refer to is कि whether this argument कि जी monetary policy जो है वो address कर लेती है inflation को, whether this argument holds any weight or not. देखिए इसमें बुनियादी तौर पे जो टेक्स्ट बुक या जो प्योर एकेडमिक व्यू है वो ये है कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो टूल्स हैं वो उसमें सर फहरिस्त जो चीज आ रही है वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और उसमें क्योंकि सेंट्रल बैंक की गोल्स में से होता है जी नॉट जस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ बट प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल। तो फौरी जो स्टेट बैंक या किसी भी सेंट्रल बैंक को उस मेजर चैलेंज को एड्रेस करने का टूल है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस like, and it's आप कह लेंगे this is commonplace, not just with Fed
दुनिया भर में हो रहा है। आई थिंक अगर कोई एक्सेप्शन मेरे जहन में भी आ रही है वो है टर्की, कि जहां इन्फ्लेशन शूट अप करने के बावजूद भी उन्होंने जो है दे हैव कंप्लीटली क्या कहते हैं टेकन अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, और बहरहाल मसला वहां भी सॉल्व नहीं हो रहा, यू नो, वेयर दे आर नॉट बेसिकली इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, बट मसला वहां भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो देखिए ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेरी जाती राय में माय 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 कंक्लूजन है कि जहां अगर आप रीसेंट एग्जांपल देख लें कि इवन एट द सिचुएशन मोस्ट रिसेंटली कि जहां वी जस्ट केम आउट फ्रॉम अ वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरनमेंट, और जहां हमारी फिर सिचुएशन सारी इकोनॉमिक ग्रोथ टेपर ऑफ हो रही थी और बाकी सारे मसाइल सामने आ रहे थे, तो वहां हमें जो मनी सप्लायर्स को मैनेज करने की जरूरत थी, बट हमने टर्फ और बहुत सारी और इस तरह के इंसेंटिव्स दिए, हमने इंटरेस्ट रेट्स भी कट किए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि या तो जी हम जरा उसका चेक एंड बैलेंसेस रख लेते कि जी वो जो सारी मनी क्रिएशन हो रही है वो कहाँ जा रही है, वो सारी स्पिनिंग में चली गई फॉर इंस्टेंस, वो कोई ऐसी वैल्यू एड में नहीं गई और वो जा भी नहीं सकती थी इतनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब ये कि वो फिर एक फैक्टर क्रिएट बनता है। तो पाकिस्तान में यस, कि अगर आप मनी सप्लाई या वो अगर आप थोड़ा उसको एक्सपैंड, थोड़ा सा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, तो वो इट फ्यूल्स इन्फ्लेशन, यस दैट हैपेंस। और सेंट्रल बैंक्स के एंगल से आप देख लें तो उनको ये फौरी फौरी अगेन टेक्स्ट बुक इलाज जो है वो ये करना पड़ता है कि दे स्टार्ट हाइकिंग रेट्स। अब इसका कितना फायदा होता है ये आप अभी यूएस में देख लें कि जहां उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स इतने स्ट्रेच कर दिए हैं, वहां इन्फ्लेशन 9% से 3% पे आ गई है और M2 ग्रोथ माशाल्लाह वहां नेगेटिव चल रही है। So that I think somehow sort of I don't know कि मैं आपको completely इस सवाल का जवाब दे सका हूँ नहीं दे सका, बट ये बहरहाल it's a very क्या कहते हैं, आप समझ लेंगे abstract art है when you talk about monetary policy। अच्छा, ब्लू चिप्स के एंगल से आप देख लेंगे विच स्टॉक्स आर ब्लू चिप्स, तो वहां पे जी हमने जो डाले हैं ब्लू चिप स्टॉक्स हुए हैं कि जी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के एंगल से और जो अपने जो बिजनेस मॉडल है या जिनकी प्रेजेंस है वो not just in terms of sorry the market cap but generally in the economy is quite relevant। सो ब्लू चिप स्टॉक्स को आप आसान जुबान में उस तरह से ले सकते हैं। और पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो प्योरली इसमें बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, इसमें इसमें बहुत सारे आपके यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनीज आ जाती हैं, इसमें जी पावर सेक्टर के अंदर भी कंपनीज आ जाती हैं। सो दे आर डिफरेंट से डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जहां यू वुड फाइंड ब्लू चिप कंपनीज, राइट। अच्छा, इसके अलावा बुक्स के हवाले से अगेन मैं उस स्लाइड पे आपको ले जाता हूँ कि जहां where you can see for your reference the two books that I'm recommending. Why Nations Fail, that's the name, the title of the first book, and the second book is Talking to My Daughter About the Economy. Alright, so इसके अलावा एक सवाल जी हमारे पास ये आया कि what would be the 10-year asset class CAGR look like? I think ये आप थोड़ा forward looking basis पे अगर पूछना चाह रहे हैं तो ये तो $1 million क्वेश्चन है जी। यहाँ से अगर आप देखें प्योरली पाकिस्तान के एंगल से या ग्लोबली भी, यूएस में तो देखें सिनारियो इज अगेन इतना आसान नहीं है कहना, बट अगेन इन्फ्लेशन हैज टेपर्ड ऑफ और वहां इन्फ्लेशन का आउटलुक ऑल्दो अगर आप लेटेस्ट रिसर्च पढ़ें तो वहां मिक्स आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लाइक बिल ग्रॉस, मोहम्मद अलेरियन एंड बहुत सारे और इसमें जो जो टॉप फिक्स्ड इनकम और जो जो पर्सनालिटीज हैं वो उनका थोड़ा सा इस पे व्यू है कि जी ये इतना इट्स नॉट गोना बी स्मूथ सेलिंग फ्रॉम हियर। बट इन हमारी नाकस राय में ये कि जी यहाँ से इन्फ्लेशन का जो सिनारियो है थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 सालों में इतना कुछ हुआ है कि वो सिचुएशन जो है वाज बियॉन्ड एवरीबॉडीज कंट्रोल। तो अनलेस कि जी कोई पॉलिटिकल फॉर इंस्टेंस रशिया यूक्रेन के एंगल से या कोई और कोई ड्रिफ्ट नहीं आती, बट वी आर पॉजिटिव कि जी यहाँ से सिचुएशन निस्बतन बेहतर होगी फ्रॉम द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एसेट क्लास रिटर्न्स के एंगल से आप देखें तो अगेन पाकिस्तान के एंगल से सिर्फ ऑल वी नीड टू डू इज फिक्स्ड इकोनॉमी। इफ दिस गेट्स रिजॉल्व तो यहाँ से 10-year एसेट क्लास रिटर्न्स will be phenomenal, क्योंकि जी there is so much potential which needs which still needs to be tapped and it still needs to be addressed। कि जी थोड़ी सी भी डायरेक्शन अगर आप स्टॉक मार्केट पे देख लें, और यहाँ पे मैं जो स्टॉक मार्केट से मनसूब जितने भी लोग हैं सबको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूंगा, जिस तरह से माशाल्लाह हमारी 48,000 क्रॉस हो गई आज भी, आई थिंक 1000 पॉइंट्स प्लस हमने बंद किए मार्केट। तो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स और गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कि जी जहां सूरत हाल हमारी थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ गई है, तो आप देख लें किस तरह के रिटर्न्स हमारे हमें देखने को मिले, which were even beyond our imagination as well। So going forward, again, the focus should be on the economy, and if this gets addressed properly,
whether it's real estate, whether it's stocks, and whether bonds. Yes, even bonds के अंदर I think वो जो tipping point है that can is I think is approaching very soon inshallah. So that's that for this webinar. I hope कि हमने overall जो इसका major जो essence था we did justice with that, and in the end I would like to say that this webinar will be posted on our official social media channel, and you are most welcome to ask your questions there as well. So that's that for the seminar. Thank you so much.